Hi students, hope you all are well, staying safe at your homes. So students, we are again here for your business study lecture. We are to discuss with the forms of business organizations. Today we have to discuss about joint stock company, the next very important form of business organization. So be prepared with your register and please note down the important points during the lecture because it gives you help when you prepare assignments for the same. In today's world, the technological improvements and economic factors have created the need for large scale organization. Till the day we had discussed about sole tradership, partnership, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें बिजनेस का जो स्केल है वो थोड़ा और बड़ा होता गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़े स्केल पर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी. सो इन दैट पार्ट joint stock company is considered to be most suitable form of organization for operating business activities on a large scale. So we are to discuss about joint stock company, its features, its merits and its demerits in our today's lecture. So company is an association of persons which is formed for carrying out business related activities and also has a legal status independent of its members. Simply means अपनी members से अलग इसकी अपनी पहचान होती है. It is set up by registration under the Companies Act 2013 or any previous company law. 2013 कंपनी एक्ट के अंतर्गत या उससे पीछे कोई भी जो कानूनी लॉ था उसके अंदर अगर कोई कंपनी रजिस्टर हुई है तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाती है. A company can be described as an artificial person having a separate legal entity जिसका अस्तित्व, जिसकी अपनी पहचान होती है, legal entity. Perpetual succession, long term existence होती है and a common seal और एक common seal होती है. And the shareholders are the owners of the company who exercise an indirect control over the business. बिजनेस को चलाने वाले या कंपनी को चलाने वाले जो उनके मालिक हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं. शेयर होल्डर्स मीन्स द पर्सन्स हु आर होल्डिंग शेयर्स इन बिजनेस इन कंपनीज कैपिटल. क्योंकि कंपनी अपनी कैपिटल एक साथ नहीं लगाती, वो थोड़े थोड़े अमाउंट्स में अपने शेयर्स को पब्लिक से इनवाइट करती है, लोगों से मंगवाती है और हर छोटा पार्ट कैपिटल का शेयर कैपिटल कहलाता है. सो शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल एंड द पर्सन्स हु आर होल्डिंग शेयर्स आर नोन एज शेयर होल्डर्स. नो, you have got it that shareholders are the owners of the company. Since they had invested money, so that's why they are having control over the business. Shareholders elect board of directors who exercises direct control over the business. The capital of the company is divided into smaller parts called shares, which can be transferred freely from one shareholder to another person. एक शेयर होल्डर से आसानी से दूसरे को दिया जा सकता है, मतलब उसे बेचा जा सकता है. So this is about the concept of joint stock company. Different definitions of joint stock company are given by different experts. In the words of Chief Justice Marshall, a corporation is an artificial being, invisible, intangible, and existing only in
contemplation of the law, under the law we can say. So now we have to discuss the features of joint stock company. As we have discussed so many things in the meaning of company, so features, I hope you will get it easily. First is artificial person. As company is created by law, so it is an artificial person, having no body, no soul, and no consciousness, we can say. That is, it can't breathe, eat, run, or talk. But like a natural person, a company can own property, incur debts, उधार ले सकती है, borrow money दे सकती है, enter into contracts, किसी के साथ contract कर सकती है, sue and be sued, मुकदमा भी दायर कर सकती है और कोई और भी इसके ऊपर केस फाइल कर सकता है. It can conduct a lawful business and enter into contact with others. That's why company is known as an artificial person, which is created by law, that is Indian Companies Act 2013 or any previous law. Second feature is separate legal entity. On incorporation, that is at the time of registration, a company acquires, that is gets a separate legal existence in the eyes of law. इसकी अपनी एक अलग पहचान होती है. Third is formation. Formation of a company is a time consuming. Sole proprietorship में formation बहुत आसान थी, पार्टनरशिप में भी बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन कंपनी को फॉर्म करना टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. It involves preparation of several documents and to comply with the several legal requirements before it can start functioning. And registration of company is compulsory. Next is perpetual succession. Members may come, members may go, but the company goes on forever. मेंबर्स आते हैं, जाते हैं, लेकिन कंपनी चलती रहती है, यानी मेंबर्स के आने जाने का कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. कंपनी हैज़ अ परमानेंट एग्जिस्टेंस, दैट इज इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, कमिंग और गोइंग ऑफ द मेंबर्स. एज कंपनी is a creation of the law, it can be brought to an end only by law. सिर्फ लीगली लॉ के थ्रू ही ये खत्म की जा सकती है. नेक्स्ट इज कंट्रोल. ऑनरशिप एंड द मैनेजमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स वी कैन से. शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स, बट द कंपनी इज मैनेज्ड बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Directors are the legal representatives and are directly accountable to the shareholders for the working of company. क्योंकि शेयर होल्डर्स ने ही अपने वोटिंग राइट से इन्हें चुना होता है, इसीलिए ये कंपनी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और शेयर होल्डर्स को पूरा का पूरा हिसाब देना होता है इन्हें कंपनी को चलाने के लिए. शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव राइट टू बी इन्वॉल्व्ड इन रूटीन रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, whereas management is directly involved in routine running of business. Next is liability. The liability of members in company is limited to the amount they had contributed in the form of capital. जितना हिस्सा उन्होंने पूंजी की फॉर्म में बिजनेस में लगाया है, उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतने अमाउंट तक ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती. In cases when company is suffering huge losses, then shareholders cannot be asked to contribute the unpaid balance. तो कंपनी जो है शेयर होल्डर्स को नहीं कह सकती कि वो उस अमाउंट की भरपाई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से करें. नेक्स्ट इज कॉमन सील. कंपनी may or may not have a common seal. If a company has a common seal, it must be affixed to the documents such as agreements of a company,
सार्वमुद्रा, कॉमन सील। कंपनी की अपनी कॉमन सील होनी चाहिए और जिसे उन्हें हर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स या एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स के ऊपर फिक्स होना चाहिए। इफ अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, then the person signing the document should be authorized by a board's resolutions. कंपनी की कॉमन सील, it should be affixed, it should be engraved. अगर कहीं engrave करने की ज़रूरत है तो उसे engraved भी करवाना चाहिए। Next is risk bearing. In a company, the risk of losses is borne by all the shareholders. In the event of financial crisis, all the shareholders have to contribute to the debts, but to the extent of their capital contribution. सिर्फ उस अमाउंट तक जहां तक उन्होंने बिजनेस में अपना पैसा लगाया है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। द शेयर होल्डर्स enjoy a right to transfer their shares to other persons in the open market, that is at stock exchange or stock exchange. मार्केट में जो भी उनके शेयर के प्राइसेस होती हैं उन प्राइसेस पर वो किसी को भी अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाउ नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फायदे क्या हैं इसके? Number 1 is limited liability. The liability of the shareholders is limited to the extent of the amount they had contributed as capital. मैंने पहले भी फीचर्स में ये बताया था कि उनकी लायबिलिटी सिर्फ उनके द्वारा जो अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है वहीं तक सीमित होती है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है बेनिफिट का। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। The shares of a public company are freely transferable. कंपनी भी कई तरह की होती हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। A shareholder can dispose of his shares at any time when the market conditions are favorable. Or in other terms, we can say when he is in need of money. Next is perpetual existence. A joint stock company enjoys perpetual existence. Change in its ownership and management doesn't affect its continuity. So its existence is not affected by death, retirement, insolvency of its members. Next is scope for expansion. As we had discussed about different forms of business organization, it is only a company which is enjoying large financial resources. Moreover, capital can be attracted from the public as well as through loan from banks and financial institutions. लोगों से भी ये पैसा ले सकते हैं और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आसानी से उधार ले सकते हैं। So in this way, expansion scope is unlimited as far as company is concerned. Next is professional management. A company can employ specialists and professionals in different areas of business. The large scale of operations facilitate division of work. As a result, each department deals with a particular activity and is headed by an expert. हर बिजनेस एक्टिविटी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है जिसका हेड उसका एक्सपर्ट बन जाता है और उन्हें ही उस टीम को कुछ स्पेशल काम करना होता है। इट इज़ एक स्पेशल तरह का ही एक्टिविटी करनी है जिससे वो एक्सपर्ट्स बन जाते हैं और आसानी से बहुत बड़े लेवल की बिजनेस एक्टिविटीज़ आसानी से परफॉर्म हो सकती हैं। As management of the company is in the hands of specialized and experienced personnel, that is employees, it results in balanced and good decisions. Now next is about limitations or demerits or disadvantages of joint stock company.
complexity in formation. It is not easy to form a company as compared to another forms of business organization because it requires so many legal formalities. Second is lack of secrecy. According to Companies Act, each public company has to provide information from time to time to the office of the registrar of the companies. And this information is also available to the general public. So the result of which it lacks secrecy. Next is impersonal work environment. That is, there is lack of efforts as well as personal involvement on the part of the officers of a company. फुली इन्वॉल्व नहीं होते बिजनेस के काम में जो ऑफिसर्स हैं. Moreover, large size of company makes it difficult for the owners and the management to maintain personal contact with employees, customers and creditors. और जैसे ही किसी कंपनी का साइज बड़ा हो जाता है तो उसके लिए उसके कस्टमर्स, उसके एम्प्लॉयज़ और क्रेडिटर्स के साथ कॉन्टेक्ट पर्सनल रखना मुश्किल हो जाता है. Numerous regulations. The functioning of a company is subject to large number of legal formalities. So many legal formalities are to be followed. The company is burdened with these different restrictions with respect like auditing, voting, filing of reports, preparation of documents and also obtaining certificates from different agencies. All these processes are very time consuming and expensive. And also these reduces the freedom of operations. Next is delay in decision making. In company form of organization, decision making is a time consuming process. All important decisions are taken either by board of directors or are referred to जनरल मीटिंग. या तो जनरल मीटिंग में लिए जाते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन इन डिसीजंस को लेने में टाइम बहुत लगता है. ऑलिगार्किक मैनेजमेंट. इन थ्योरी मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी अपीयर्स टू बी डेमोक्रेटिक. लगता है कि डेमोक्रेटिक है, शेयर होल्डर्स ही चुनते हैं अपने डायरेक्टर्स को. However, in reality, management of the company is the worst example of rule by a fear, we can say. Shareholders of a company are scattered and disunited. वो अलग अलग रह रहे होते हैं, इकट्ठे नहीं होते. They don't take much interest in company's meeting. So therefore, directors enjoy considerable freedom in exercising their power. तो उनकी इस एब्सेंस का फ़ायदा उठाते हुए डायरेक्टर्स खुद ही अपनी पावर का ज़्यादा यूज़ करते हुए समटाइम्स ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट होते हैं. इन सच ए सिचुएशन डिससेटिस्फाइड शेयर होल्डर्स हैव नो ऑप्शन बट टू सेल देयर शेयर्स एंड एग्जिट द कंपनी. नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज conflict in interest. There may be conflict of interest among various stakeholders of a company. For example, employees may be interested in higher salaries, consumer may desire better quality products at lower prices. कम कीमतों पर ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स को पाना उनकी इच्छा हो सकती है कस्टमर्स की. एंड शेयर होल्डर्स may ask for higher dividends. जैसे शेयर कैपिटल का एक हिस्सा होता है, डिविडेंड ऐसे ही प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है. शेयर्स को डिविडेंड दिया जाता है. सो शेयर होल्डर्स में आस्क फॉर हायर डिविडेंड. जब प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो शेयर होल्डर्स भी ज़्यादा डिविडेंड के लिए कह सकते हैं. दीज डिमांड्स क्रिएट्स प्रॉब्लम्स because it is very difficult to satisfy such different interest. So today we had discussed about joint stock company, its features,
its importance, that is benefits, and its limitations, that is disadvantages. Hope you have got through this lecture. I'll send you questions for your practice in your WhatsApp group. So take care.